Hi, this is Shanid. Welcome back to Zero Budget Productions. Hi, this is Sandeepan, and this is the 8th episode of Walking the Streets. So, our guest for today is Soham Banerjee. He is also a part of street photo art. He's a brilliant photographer with a very unorthodox approach, and उसका जो भी काम है ना, मतलब ये काम देख के यू कैन नॉट मेक अ कॉपी आउट ऑफ इट, या फिर ये देख के तुम नहीं बोल सकेगा कि ऐसा देखा है ऐसा वाला पिक्चर विद दिस फ्रेमिंग दिस टेक्निकलिटी. तो उसका काम बहुत सही. अभी सोहम को हम कैसे जानते हैं तो बेसिकली स्ट्रीट फोटो आर्ट का जो दोस्त लोग हैं सब दीप्रो, सोमोजीत, सोमन, रितंकर, इन लोगों को मैं जानता था, लेकिन सोहम को जानता नहीं था पर्सनली. तो हम लोग का गाजन के टाइम पे काटुआ गया था विच इज़ इन बर्धमान. तो उसका पहले वाला दिन दीप्रो कॉल मी अब कि भाई ऐसा जाना है ये वो, और हम बोला हाँ ठीक है चलो, सभी को जानता है चापनी होगा. वो फिर बोला हाँ एक नया आदमी है सोहम बोल के. हम बोला मतलब कैसा है, मतलब ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग कोई किसी को जानता नहीं, इतना ट्रिप में जा रहा है. बोला अरे भाई तुम मिल ना उसे. कट टू लाइक 25-26 आवर्स आफ्टर दैट हम और सोहम एकदम क्या बोलेगा, उड़ता पंजाब, कबीर सिंह सब बन चुका था. दार्जिलिंग मेल में रात को 2:30 बजे हम लोग लौट रहे हैं विदाउट एनी फकिंग टिकट. सबका फटा हुआ है भाई, टिकट चेकर आएगा, टीटी आएगा, ये वो क्या करेगा. और हम लोग का तब क्या बोलेगा, दिमाग में वो बाबू भैया का डायलॉग घूम रहा था कि दारू में बाप चला गया, गरज चला गया, टेंशन कैसे नहीं जाएगा. तो वी अप्लाइड काइंड ऑफ द सेम लॉजिक, और टॉयलेट के सामने सोते सोते हम सब लोग आया और कैप्टन जैक स्पैरो. यस, कैप्टन जैक स्पैरो अपरेंटली. हम लोग क्या बोलेगा, मतलब ऐसा मज़ा तो फोम के साथ ही होता है. मतलब उसका जो अप्रोच है इज़ मतलब कि कुछ जगह में हम लोग का बहुत सिमिलरिटी होता है. मतलब वो बोलता है ना कि एक तो मतलब क्या बोले, एक बिजार काइंड ऑफ फोटोज़ उसको अच्छा लगता है, मेरे को अच्छा लगता है. तो दिस इज़ समथिंग सोहम और मेरा बहुत मतलब रिलेट करता है. एंड द काइंड ऑफ जर्नी ही हैज़ बीन थ्रू, मतलब ऑब्वियसली क्या बोलेगा, मैंने हिज पिक्चर्स विल काइंड ऑफ ब्रिंग आउट हिज जर्नी. व्हेन यू गेट टू सी हिज पिक्चर्स, आपको देख के समझ में आएगा कि दीज पिक्चर्स आर वन ऑफ अ काइंड. तो मैं सोहम से सिर्फ एक बार ही मिला हूँ, एंड आई लव्ड दैट गाय. मतलब इतना सही बंदा है वो, एंड ही इज़ ट्रू टू हिज आर्ट वर्क. मतलब इतना पैशनेटली वो फोटोग्राफी को फॉलो करता है. एंड उसका फोटोग्राफी का जो स्टाइल है, दिस इज़ वेरी यूनिक. मतलब आपको जैसे सानिद ने बताया, कहीं और इस तरह का फोटोग्राफी नहीं देखने को मिलेगा. तो ही हैज़ अ वेरी यूनिक अप्रोच टू एवरीथिंग. मतलब उसका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स या फिर सब्जेक्ट को स्पॉट करना जिस तरह का वो करता है, एवरीथिंग इज़ ब्रिलियंट. आई पर्सनली लव हिज फोटोग्राफी. तो उसका हर काम का क्वालिटी इज़ वेरी हाई. बहुत हाई क्वालिटी का काम करता है वो ना, मैंने स्पीकिंग सीरियसली. मतलब और उसका क्या होता है ना, मतलब द रूल्स ही लिव्स बाय व्हाइल टेकिंग फोटोग्राफ्स आर द रूल्स ही फॉलोज इन हिज लाइफ. बहुत चिल्ड आउट रूल्स है. एंड यू सी मतलब उसका कोडिंग कुछ अलग है भाई, नॉट लाइक एवरी अदर फोटोग्राफर आउट देयर. मतलब फोटोग्राफर क्या, वो इंसान ही जिस तरह का है, मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीवन. क्या बोलेगा, बहुत अच्छा लगता है. मतलब इफ यू गेट टू सी दिस गाय एनीवेयर, मतलब देख के एक तो लगेगा कि कुछ है इसमें. मतलब नोबडी कैन एवर हेट दिस गाय. हाँ ये मतलब बहुत डाउन टू अर्थ है, तुमको समझाएगा, बात करेगा. ये बोला ना, मतलब नहीं जानता था, उसके बाद से मतलब वो पूरा ट्रिप में है. मतलब क्या लग रहा है कि इसके साथ बहुत साल से जान पहचान है, बाकी किसी को नहीं जानता, ऐसा वाला सीन हो गया था. तो उसके बाद से भी हम लोग का जब भी अभी सब जब निकलता है, मतलब उसके साथ बहुत मतलब सॉर्टेड हम लोग का सीन्स होता है. एंड ठीक है, अभी और ज़्यादा बात ना करते हुए लेट्स स्टार्ट. यस. Hi, my name is Soham Banerjee. I'm here on behalf of Street Photo Art. We are a photography collective on Instagram. And thank you Zero Budget Productions. Sanid, I know this guy for some time now. And I won't really thank him because we had Bangla on the train and we didn't even cut tickets. We just sat down right beside the bathroom and spent the whole night like that. So that is our history. We went to shoot this Gajon festival. So this is something about me, and I started photography somewhere around 3 years ago. When I started, I didn't really know what I was doing. I started with all those
water droplets on leaves and everything, and like the things that goes on in Instagram. But then this guy I met, he told me that you should actually start researching on photography, and he was the first person who told me that all my photos are shit. So then I started actually researching on what photography means and what street photography is. So I started looking at the pictures of some masters like Henri Cartier-Bresson and Vivian Maier, and there's one guy who is like my Gurudev, that is Joseph Kudelka. So after I saw all these guys' pictures and everything, I started really understanding that photography means capturing stories. So that's what I have been doing, trying to do ever since. So when it comes to inspiration, I think we can get inspired from anything actually. I'm not the kind of person who believes that this is what should inspire you and this is not. I get inspired by the world around me. Culture, people, anything really. People's stories are what actually inspires me. And like I said, all these master photographers, especially Joseph Kudelka, and photographers here like Raghuveer Singh, Raghu Rai, and in fact all my friends, the people of street photo art, everyone around me, they inspire me. So I was always a very introverted person. I didn't know how to talk to people, and I mostly used to stay alone all my life, like ever since I was young. But actually when I was growing up, I started talking to people, I started mixing with people more, and photography is one of the main things that actually got me talking to people. And I started judging people less, I started seeing people for who they are when I'm looking at them from the viewfinder. And actually one of my main problems is I can't talk to people, I can't approach people. But when I have the camera in my hand, I feel that I can do anything actually. I go up to random people, I click their pictures, I flash the thing in front of their face. Keu khisti mare, keu gali dae, but everything is fine. Sab chalta hai. So this is what I learned from street photography, and like this is my biggest challenge in street photography. Another thing is coming up with new ideas actually, coming up with unique things all the time. This is something I believe that copying someone will only get you to some level, but at the end of the day, if you have to be something, you have to be yourself. So finding my own vision, that is something of a challenge for me. So like I said, one of the most important things that I learned from photography is to see people and not judge them really. Like all around us we see so many kinds of people, and we have this tendency to judge people actually. But when I'm clicking photographs, I understand that everyone is actually kind of same. Like everyone is kind of stupid fucks, but everyone is actually still people. Like I see them as human beings, and I learn about different kind of cultures. I learn what dreams, what hopes people have. I talk to new people on the street. They ask me what am I doing, and then I talk to them like what they are doing over here. And you know, during those festivals, people come to these ghats and Ganga from like far away. So they ask me what I'm doing. I ask them what they are doing, and we get to know each other. We talk. And this is one of the very important things that I learned from photography, that we are all humans. The title of this is Time is Like an Ocean. So what this means is that everything is fading in this world, and it's like with time it takes everything back. Oceans, mountains, trees and everything, it fades with time. Rocks and whatever there is, everything is actually in a constant state of flow. So this is what it means. This photograph was taken in Darjeeling. I really liked the fog and the light, the way it was coming from behind, and the children were playing with bubbles and everything. And I really liked this thing that the bubble was on the head of this person,
and it feels like this girl is about to pop that bubble. It's kind of like that. So this photograph is the head of a horse sculpture, and grass was growing out of it. There are some silhouette of people in the background. I've used flash to highlight the horse's head, and this kind of signifies the battle between man and nature, that every time human beings are trying to control nature, but at the end of the day, when things are left behind, nature always takes over. This is slow shutter work with slight panning. Okay, so what this means is it's kind of like the same thing, that everything is in a state of flow. All these people, they represent the human swarm sort of, and they are moving forward or they are moving in some direction. And this, the concept of time, that everything is moving and nothing is actually constant, this is what I wanted to say. This was taken this year in Holi, and I really liked this moment that everyone was having fun and they were full of joy and playing with colors, with pink and red, and everything was just flying around and they were dancing with music. And this particular photo, I loved the thing that it feels like the colors are coming out of that person's hand. It actually came completely by accident. Okay, like I was trying to make something like this, but this is a happy accident. This picture happens to be one of my personal favorites actually. Everyone asked me, how did you click this, getting so close to people and everyone is bathing. So actually I was high, okay, and I stayed in one place for over 2-3 hours. I was exactly in this spot. So this is something I would like to tell everyone, that stay in one place, let people become accustomed to you. These people were so used to me that they were just laughing, dancing, doing whatever they wanted in front of me, and they were happy that I was clicking their picture. They were smiling at me, and that is a different kind of feeling altogether. This is one of the first maybe street photographs that I clicked, and it was actually taken with a 7300 lens. There was a time when I was very much afraid to go near people, so I used to use this 7300 zoom lens, and it was raining cats and dogs, and I was in a shade and these children were playing and dancing around, and I really loved this moment that the water was flashing. This picture was also clicked just after that one, and the water droplets actually, they have been highlighted to show that this is a holy river. Like, we have a deep attachment towards this river Ganga, and everyone is so happy and dancing and splashing around the water, and I loved clicking these moments. This picture is called Holy River and Enlightenment. Ever since I learned about this flash work, this hard flash and making things look like this, I wanted to portray enlightenment by this holy river. And all these round objects, they are kind of like celestial bodies. And this was a sadhu who was taking a bath in the river. It has been slightly more highlighted by post-processing. It was not so bright before post-processing, but this is what I wanted to show, that enlightenment with the river. This picture is also one of my personal favorites. It is made with flash and slight zoom of the photograph. So what I wanted to do is make these kind of
angel wings on this little girl, and it felt like she was radiating that happiness outwards. It is clicked during Dev Deepavali in the ghats of the river Ganga, and these children were playing happily, so I wanted to portray that actually. This was taken during the lockdown time, and actually the way I make these pictures is that I don't think about the series beforehand. I go on clicking, and somehow some pictures just form a pattern in my mind. So this thing, I was just going on clicking pictures in the roof. It was during lockdown, so it was very frustrating actually. I couldn't get out of my house, but slowly I started taking pictures and everything. So this formed the idea of a series. It's called A Silent Yearning for Freedom. So these birds flying and this girl flying the kite, it is kind of signifying freedom. This is a kind of a personal story for me. I had an accident some time back, and actually I almost died in that accident. But here I am, like, going around clicking pictures and everything. And photography actually gave me a reason to get up and get going again. So this crow flying above, it kind of signifies that death and kind of freedom. And that picture of the X-ray is actually my leg with all the nails and plates, everything that's screwed there. It's sort of like, no matter what happens, and with this experience I actually found how to be more free than before, and how to get out more and click pictures and do whatever I feel like. So one thing I would say it's very important for someone who's trying to be a street photographer is don't try to rush yourself. I think many people, what they do is they want to win competitions, they want to make their mark in this world, and they just go around clicking pictures and everything, and that is good, that is required, but you know, actually for learning photography you need to dial down, you need to really think about who you are as a person and click that, the things that you like, the things that you connect to. And this is another thing, photography is not just about clicking pictures, it's about connecting with things. I know I sound like a very someone, but I'm actually no one, okay? Even I am on this journey, I'm trying to learn who I am, I'm trying to learn my own vision. And another tip is that just stay in one place. Try to stay in one place for a long time, because if you don't stay in one place, you actually don't get the feel of that place. There was this very famous photographer, Raj Sarkar. In one of his interviews, he was saying this, not Raj Sarkar, Navin Vatsa sir. So he was saying this, that when you are actually in one place for a long time, you become one with the place, and when you become actually one with the place, then you find out new things, then you find out what your vision actually shows you, not what is actually around you. So this is something that I would say to everyone. कैसा लगा बोल? भाई मेरा तो सीरियसली क्या बोलूं, बोलती बंद हो गया. एग्जैक्टली दिस वाज माय रिएक्शन. मैंने पहली बार जब उसका फोटोज देखा था, गॉड, मतलब ये सीरियसली भाई पहला झलक में देख के, मतलब क्या बोलेगा. हाउ द फक डू आई एक्सप्लेन पिक्चर्स लाइक दिस. मतलब द वे ही रिलेटेड नेचर विथ ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स. मतलब ये देख, आई मीन द काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन दैट इज हैपनिंग हियर बाय ऑन द ये हॉर्स हेड या फिर कुछ भी. ये तो काव लग रहा है, गाय का वो लग रहा है. कुछ होगा दैट आई नहीं जानता भाई क्या बोलेगा. उसके ऊपर फ्लैश से जो हाईलाइट किया है, द एंटायर फील ऑफ दिस पिक्चर, द रियल यू नो फाइट बिटवीन मैन एंड नेचर, द वो जगह इज हाईलाइटेड इन. प्रणाम भाई तेरे. डीप शिट मैन. कुछ ज्यादा अमेजिंग. ये भाई मतलब देख, वो वैसा भी फोटो खींचता है. दिस इज जक्सटापोजिशन ऑन अनदर लेवल. इट विल, तुम देखना इसको. बस सुहम, एक मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको ना थोड़ा अगर तुम
इस साइड से मतलब ऊपर में ना थोड़ा राइट को देख, जहाँ पे वो पेड़ है और आसमान है, थोड़ा मेरे को नेगेटिव स्पेस लगा। वो अगर तुम कुछ भी कंसंट्रेट करके थोड़ा लेफ्ट में करता या क्रॉप आउट करता, ये तो ऑब्वियसली बहुत सही है और थोड़ा सही हो सकता था, वेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। और भाई ये जो क्या बोलेगा, देख इधर पे ये मोमेंट देगी सामने वाला सब्जेक्ट का, उसके ऊपर पीछे से दिस इज क्लियरली लुकिंग लाइक ही इज शूटिंग बबल्स आउट ऑफ हिज फिंगर। डूड बहुत सही भाई, बहुत सही। और Seriously, I have nothing to say. क्या बोलेगा दिस पिक्चर, ऑनेस्टली This is very emotional. hands down dude, क्या बोलेगा, द वे यू एक्सप्लेन दिस पिक्चर, द रेफरेंस बिटवीन योर you know being so near to death and you know the flying crow resembling freedom and death at the same time. Extremely emotional this The picture way is. you are connected to the pictures on a emotional and mental level, भाई हैट्स ऑफ। ऐसा बहुत कम फोटोग्राफर को देखा है ना भाई जो अपने काम से इतना में मतलब इमोशनली अटैच्ड है। मतलब दिस इज बेसिकली हिम वर्किंग ऑन हिमसेल्फ एंड ऑन अदर सब्जेक्ट्स एंड रिलेटिंग देम। बहुत सही भाई, Especially for this picture, salute to you, man. एग्जैक्टली भाई, Seriously. ये बहुत मतलब The level of dedication Hats off, that you've hats shown off. towards your art form, it's इट्स commendable. शुड लाइक सीखना चाहिए सबको। Seriously सीखना मतलब इतना चाहिए. एक्सक्यूजेज अभी बढ़ गया है ना, ये नहीं है, वो नहीं है, ये खराब है भाई, फक एक्सक्यूजेज एंड फॉलो योर ड्रीम्स मैन। ये भाई द वे यू एक्सप्लेन थिंग्स फेडिंग अवे विद टाइम भाई, मतलब Seriously, मतलब तेरा each and पिक्चर every देख के ना picture. मतलब वो होता है ना कि अलग एक ठो दुनिया में चला जाता है आदमी लोग की, क्या बोलेगा मतलब ऑनेस्टली वी डू नॉट एक्सप्लेन पिक्चर्स लाइक विद दिस फ्लो और दिस एम्बियंस, लेकिन ये सब पिक्चर्स देखने के बाद कोई दूसरों का पिक्चर देखने के बाद we can speak, इसका पिक्चर देखने के बाद कुछ बोलने के बाद दूसरा पिक्चर्स देखने के बाद वी स्पीक, ये सब पिक्चर्स देखने के बाद रियली वी फील। मतलब ये जो क्या बोलेगा भाई, बहुत सही काम है भाई, द वे यू एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ टाइम विथ स्लो शटर्स एंड ऑल भाई, दिस भाई ये पिक्चर burning your subject with flash and relating bubble to celestial bodies, god heads of man। हावड़ा का ये पर्टिकुलर जगह में लाखों फोटोज देखा है भाई, बट नेवर सॉ अ पिक्चर विद दिस अप्रोच, हेड्स ऑफ। ये तो ठीक है, ये दिस वन क्या बोलेगा भाई, बहुत 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 सही। और फ्लैश इज तेरा इसका जो समझा ना भाई, फ्लैश स्टोरी टेलिंग एंड इमोशनल कनेक्टिविटी विद द क्या बोलेगा पिक्चर्स और आर्ट फॉर्म, दीज आर इज हाईलाइटेड पॉइंट्स मैन। कुछ भी भाई, सब पिक्चर्स ठीक है ये है, लेकिन ये पिक्चर विल ऑलवेज बी माई फेवरेट। this is a picture that whoever sees this picture will remain in their memory for a very long Exactly time. भाई, and the kind of struggle you have been through, and I mean that is not struggle to you भाई, अभी तुम जैसा काम कर रहे है भाई, क्या बोल सकेगा, बेस्ट ऑफ लक मैन, हैट्स ऑफ टू योर डेडिकेशन। दिस पिक्चर ऑल्सो क्या बोलेगा भाई, Each and Honestly, every Shom, picture, मतलब your photography skills are on another level. तुम मेरे को जानता है, आई एम ऑलवेज दैट गाय जो टॉप ऑफ द फर्स्ट हंसेगा, खिल्ली उड़ाएगा, मजा करेगा, लेकिन ये सब पिक्चर्स देखने के बाद इवन मतलब आई एम काइंड ऑफ फीलिंग यू नो सैड फॉर कि ये सब तेरे साथ हुआ है, एंड आई एम सैड। Actually, we should not feel sad. We should be proud of him. Proud. I think I'm not only sad, but I'm also happy कि see this is the reason you are doing so good in your life. I mean झमेला सबका होता है, सबका आता है, कोई ना कोई पॉइंट पे आके डेड एंड हिट करता है, बट यू चोज कि ये डेड एंड नहीं है मेरा, एंड क्या You stood up again. It's huge respect for you. Literally stood up again, man. Huge respect, man. क्या बोला? Anyway, ज़्यादा सीरियस बात हो गया है वीडियो में, तो दिस वाज ऑल अबाउट सोहम, एंड इसका अभी से बोल दे रहा हूँ, इसे देख सोहम के लिए मैं ये बोलेगा, एंड आई हैव सेड दिस अर्लियर आल्सो, फोटोग्राफर्स लाइक सोहम दे आर वेरी 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 अंडररेटेड। ये हम बोलेगा तो इसके लिए इफ़ द होल वर्ल्ड गोज अगेंस्ट मी, जीरो फक गिवन, लेकिन ऐसा फोटोग्राफर्स हम देखें ना बहुत अंडररेटेड है, ये सही बात ओनली है. बिकॉज कि हाँ मतलब इसमें फॉल्ट नहीं बोलेगा, दिस इज द वे दे चोज टू बी राइट। मतलब यू वोंट फाइंड सोहम की बहुत प्रमोट कर रहे हैं ये वो, नहीं 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 नहीं, ही इज मतलब ही लव्स हिज पर्सनल स्पेस, जान पहचान 2-3 लोग आदमी हैं, उन लोगों के साथ ही घूमेगा, एंड
maybe that is one of the reason, लेकिन these works should get recognized on another level. Obviously ये सब एक level पे जा चुका है, लेकिन फिर भी मतलब क्या बोलेगा भाई, you deserve a lot more than what you are getting right now. And the audience, the viewers जो देख रहे हैं, if you agree कि ये होना चाहिए तो you know just support him. That is all he needs. I mean थोड़ा देखिए, जिसका जितना भी दिल कठोर होगा ना भाई, कोई काम का उसका वैल्यू देगा ना, अच्छा लगेगा कभी ना कभी. सही तो बात है. होता है. दिस इज एवरीथिंग ही इज यू नो फाइटिंग फॉर. ही स्टूड अप. सब कुछ का रीज़न ये फोटोज़ है और कुछ नहीं. तो थोड़ा उसको सपोर्ट कीजिए, मतलब फॉलो हिम, यू नो, लेट हिम नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ मच यू लाइक हिज वर्क. एंड सी ही हैज़ बीन एन इंस्पिरेशन मैन For all of us in fact. तो follow him. We'll give the social media links, Facebook, Instagram, everything. And I hope मतलब आदमी लोग को इससे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि जो भी हो रहा है, do not Obviously मिलेगा. give up. And especially for Soham, keep up the good work, man. You inspire a lot of people, including us, of course. Obviously भाई, तो जानता है ये, मतलब हाँ. होता है एक पॉइंट पे आता है कि you either fight back or you fall back. And And he you chose chose to to fight fight back back. each and every fucking time. And It's the most hats off, important भाई. thing. बहुत से. एंड आई एम प्राउड कि तुम इतना सही काम कर रहे हैं. देखिए, हम लोग का पहला वाला गेस्ट फोन कर रहा है. ये गेस्ट अभी हम लोगों के साथ मीटअप है. देख लीजिए. गेस्ट का फोन अभी उठाना पड़ेगा थोड़ी देर बाद. उठा लेंगे. उठाएगा. आ रहा है भाई, रुको थोड़ा. इसको 5 मिनट बोल के बहुत लेट करवाए हम लोग. So anyways, ठीक है. if you like today's video, please share, Yes. subscribe, and comment. Tell us how you felt about the video and the pictures. And please थोड़ा subscribe कर दो, है कि नहीं? सब्सक्राइब कीजिए. That is the only thing that we require at this point. कुछ ज़्यादा ही फ़ोन कर रहा है जी. और सोहम का जितना भी सोशल मीडिया हैंडल्स है, सब लिंक हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल देंगे. यू मस्ट चेक देम आउट एंड टेल अस एंड ऑल्सो हिम हाउ व्हाट यू फील अबाउट हिज वर्क. आई एम श्योर यू लव हिज आर्ट फॉर्म. एंड आपको अगर इनमें से कोई भी पिक्चर अच्छा लगे एंड यू वांट टू बाय द पिक्चर्स, यू कैन जस्ट लेट अस नो. विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. सोहम थोड़ा ये क्या बोला, फॉलो हिम, सपोर्ट हिम एंड लेट अस नो कौन सा फोटोज सही लग रहा है. तो और वीडियो में भी इफ़ यू वांट सम चेंजेस विद द क्वेश्चन पैटर्न्स और सम रिव्यूज, और इफ़ यू वांट एनी, मतलब कोई अगर गेस्ट का नाम दिमाग में है कि इसका वीडियो देखेगा तो मज़ा आ जाएगा, जस्ट लेट अस नो हिज नेम एंड we'll see if we can reach out to him. So I think that's all for today's video. Hope to see you मिलेंगे soon. आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय. So I would like to thank Zero Budget Productions for this great opportunity, and really what these guys are doing, it's something absolutely new. I haven't seen a single YouTube channel or anyone from Kolkata take this approach. And actually the photographers that they are interviewing, not me of course, but some of those guys are great. Like, I think we can all learn a lot from them, and this is actually something like a very good learning platform for photography that I think they are doing a really great job. And that's it, I guess.